तो हाय फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इसका एंड ये मीशो से है एंड दिस इज समथिंग एनिमे रिलेटेड, मतलब सॉरी एनिमे मांगा रिलेटेड। तो वो मेरे को हमेशा एक्साइटेड रहता है क्योंकि और ऊपर लिखा भी है बिकॉज आई ऑलवेज लव दैट एंड दिस कम्स इन दिस पैकेजिंग। मैं क्या उल्टा सीधा काट रहा हूँ, सो सॉरी। दिस इज़ वन पंच। तो मैंने वन पंच का फर्स्ट सीज़न ही देखा था नेटफ्लिक्स वाला एंड आई कैन नॉट बिकॉज मेरे को लिटरली आई कांट इवन टेल यू कितने लोगों ने मेरे को रेकमेंड किया है लाइक तुमने वन पंच देखा, वन पंच देखा, वन पंच देखा, मेरे देखना एंड आई लव फर्स्ट सीज़न एंड मैं आई वेटिंग कि मेरे को कभी टाइम मिले तो मैं पूरा वो देखूँ एंड दिस इज़ वन पंच रेटिंग प्लीज़। दिस इज़ नाइस, लाइक यू जस्ट आस्किंग फॉर रेटिंग, नॉट द चिट विट देखे रिश्वत देखे, यू जस्ट आस्किंग, दैट इज़ ओके एंड दैट इज़ नाइस। सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सो दिस इज़ वन पंच का मांगा सेट एंड दिस इज़ यू नो अगर 1000 एपिसोड है तो आप गेस कर सकते हो कि सॉरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन पीस और यहाँ पे वन पंच मैंने दोनों सीजन देखे तो मैंने पढ़ा कभी नहीं है तो आई एम सीरियसली सॉरी। दिस इज़ वन पंच मैन, आई थॉट इट्स वन पीस, मेरा दिमाग भी चला गया। नहीं थी सर सीज़न 3 आने वाला है या फिर चल रहा है सैमल कास्ट पे, आप क्रंची रोल पे देख सकते हो इफ यूर इन इंडिया। तो दिस इज़ प्रैक्टिकली लाइक अ वेरी मैनली थिंग एंड इफ़ यू सी अ सटल हंट्स इन बिटवीन यू वुड सी कि क्यों ये मैनली है, स्पेसिफिकली द ड्रैगन फ्लाई वाला थिंग। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद अ सुपर हीरो की व्हेन समथिंग इज़ टू पावरफुल how would you defeat it, which is something against you should not make somebody too much powerful also because otherwise there will be no point of defeating them. So usi pe based hai. So our character is too powerful that he can beat everything with one punch, that's basically it. And ye aisa hai this is his master, this ek wasp wala bhi rahega, this is that lady, this, and then he has a fight and everything, like everything always ends with. So these are the 15. So let's start with the first one and let's see की quality क्या है. So this is the first one, One Punch Man, और पीछे ये लिखा हुआ है this is subordinate Saitama, sorry this is Saitama and is an android who thinks, and I don't know कि ऐसे वाले में पढ़ना चाहिए. I think this is from this side, so few of them is from this side actually. And then this comes and he has this problem कि he can just finish everything with one fight. आर्टवर्क की बात करूँ ओके है, लाइक कई जगह पे कट रहा है. आई डोंट नो इट इज़ इंटेंशनली बिकॉज ऑफ द कॉमिक का फॉर्मेट वैसा है, बट इट इज़ गुड, इट इज़ रीडेबल. लाइक सम काइंड ऑफ आर्ट वर्क लाइक दिस वुड बी थोड़ा सा आई थिंक डार्क हो सकता था और हल्का सा वुड हैव बीन बेटर. आई थिंक प्रिंटेड बहुत लाइट है एज़ कम्पेयर टू द दिस सी कि प्रिंटिंग वगैरह इट्स very light as compared to usually, but yeah, this is the first. Then let's go through second. Yeah, so let's do the second. This is how it looks and उल्टा रहेगा तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा. Okay, printing quality, I think spoiler alert if you know, this is Numen Rider, I think comes that, and it's very good and interesting, like something when it shows is looking for power, he is actually have a power. So now, so yeah, this is the third one. This how it looks, blah blah blah, looks nice, looks good. यहाँ तक आर्टवर्क है ठीक हो गया. Then it's master, उसको सिखाता है. I think I forgot, मतलब बहुत पहले, और ये कंटिन्यूटी में नहीं देखो ना तो you will forgot, but you will love it. What I'm just saying कि कैसा है quality, print quality if you want to, and if you are a reader you would like, you won't mind the spoiler. This is I think Numen Rider. I loved his character, he just cycles and there is no limit to Saitama's punch and I don't और वो कब तक जाएगा. And this kind of a character you don't know कि like how much can you push it. And then there is this, I think this is the alien where alien comes and सब उसको beat करने की कोशिश करते हैं and Saitama does that again with one punch. So it becomes like now it doesn't have a challenge or anything, so that's become, I think yeah, this is the one-eyed wala. So and even if you think he's going to lose and this and he does again, so he wins it one punch man. So that spin is very good कि एक पंच से आदमी कैसे ही, मतलब आप उसको कहाँ तक कैसे स्टोरी लाइन्स को कॉम्प्लेक्सिटीज कर सकते हो, दूसरे को पावरफुल दिखा सकते हो, एंड यू नो इट ही इज़ गोइंग टू विन अगेन एंड हिज मोटिवेशन फैक्टर बिकम्स अ चैलेंज फॉर दैट. अभी तक इट्स गुड एंड शी इज़ लाइक शी कंट्रोल्स विंड्स.
I think थोड़ा सा और deeper होते तो it's would be better. But और she is very famous in cosplay. I forgot the name, but Comic Con वगैरह में ना आपको cosplays में ये सारी दिखेंगे mostly. And this यहाँ तक आते आते the quality of the cover is little better as compared to the previous ones. Yeah, this is a darker. This is actually a good shade of printing. See, the dark is so dark and actually looks good because of the quality बोल लो. This dark I need, like maybe printing का हो सकता है, maybe कुछ और problem हो सकता है, but here see this. It also could be the artwork, वो सब. But here it looks like an actual manga जो One Punch Man का जो dynamic होना चाहिए, action होना चाहिए, उस type का. This is One Punch Man का लगता है. And this is some I think some jujutsu, some guy. I think I haven't reached here. This is season 2 अगर है तो. Season 2 and with the aliens if I am not wrong. This is where he learns from a very beginning. And then he's also like, and he doesn't have any superpower or anything. He just learned with his sheer will. He used to be fat person. And then he with the sheer will and training, he become that strong. Like, I don't know if it later changes or anything, but it's that he is a very hardworking person who understands and hard works so much. So that is also another. So it's quite manly and he's bald. So, you know, it's actually taking poles apart. And this is, I think this is in season 2. So yeah, this is the 1 to 15. I would say it would have been a darker better, but it's clean in a sense ki better and everything. So yeah, this is One Punch Man. This is the 15th of them and loved it. Please like, share and subscribe and buy from the link in the description. Bye bye. Thank you.